All right. Okay. Okay. So we are all set to go. All right. Shabana ji, karen start? Yes, Sandeep. Okay. All right. Okay. So good morning once again. And today's topic, as you must be knowing, that we are in 2024. And my topic, as you must be knowing, that last two sessions we are talking about reflections, we are talking about resolutions. So today, in that category itself, I am talking about today is set goals, not resolutions, because हमने last time देखा था and we discussed this thing that resolutions जो हम बनाते हैं हर साल कहीं ना कहीं हम जनवरी या फरवरी आते आते वो resolutions हमारे fade होने लगते हैं and all the new spirit and all things starts falling down one by one. All goals जो भी हम बनाते हैं या बना नहीं पाते हैं ढंग से, so resolution नहीं बनाएंगे, हम goals बनाएंगे. So that's what we will talk about today. So set goals and not resolutions, and we'll talk about how to do it and what is the new thing we can add in our goal, और हम क्या उसको कैसे हम इवैल्यूएट करें, कैसा क्या एड ऑन हम करें. स्मार्ट गोल की तो हम बात करते ही हैं, राइट, बट व्हाट कैन वी ऐड दैट आवर गोल कैन बिकम रियली ट्रू. व्हाट आर जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो हमारे गोल्स हमने अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, हाउ कैन वी एक्ट ऑन इट, actually act on it and come to the conclusion and take it to the next level. So okay, so I'm sharing my screen right away, so just give me a moment. Yes, so let us see this. All right. Okay, are you able to see my screen, Shabana ji, everyone? Yes. Okay. All right, so goals, not resolutions. So okay, so same story every time, every year, right? And what's that story? The story is that every new year we tell ourselves that I'm going to do this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? And we do not even half of them. This year I'm going to do this thing, learn this thing, act on this thing, and the new year ends and we repeat the cycle all over again, isn't it? Yes or no? Yes. Yeah. All right. Okay. So research, as I showed you the data last session, that no, most of the resolutions fall flat, and research shows that 80% of the new year resolution fail by the beginning of the February. So January तो हमारा 10 तारीख हो गई आज, और ये जनवरी हमारा खत्म होने वाला है और 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, राइट. एंड रिसर्च शोज कि बाय फरवरी वो सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो हैं तितर बितर हो जाते हैं, राइट. And why? Because New Year resolution seldom have actionable steps नहीं होते हमारे. बहुत ही कम cases में we are so determined, और हम कहीं ना कहीं we lose track of it, we lose sight of it, so we are not able to achieve our resolutions because there is no actionable steps attached towards that, right? So they are created out of peer pressure, and that would be based on your arbitrary date कि इस डेट पे हम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, इस मंथ में कर लेंगे, but we'll keep on postponing it and ultimately it doesn't happen. Okay, all right. So this is what this is the same story all over again, every year, every month, like that it is continuing, right? So what is the kind, हम क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं इसको, right? And इस पे हम और बात करेंगे. तो रिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं. रिफ्लेक्ट, ये जैसे रिफ्लेक्शन की भी मैंने बात की थी, तो रिफ्लेक्ट ओवर ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ टू डिटरमाइन वेयर यू आर, आप कहाँ पे और कहाँ जाना चाहते हो, वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू आर and where you want to go. Start reflecting it. First of all, reflection is very, very important in terms of your identifying your goals, and in fact, that's the first thing. Goals are the object of your ambition or effort, right? So you need to first start. They are very personal. My goals can be different. Your goal can be different. So goals हर व्यक्ति के different हो जाते हैं. Our lives are not centered around one common axis because we are a complex beings.
वी आर कॉम्प्लेक्स बीइंग, तो हम एक कॉमन एक्सेस पे हमारी लाइफ नहीं चलती है, राइट? So as I said, we are a complex thing, beings. Reflect on when we are doing reflection, no, while making a goal, because as I said, this would be the first step in what you create your goals or do your goals, or you do your goal settings. Reflect on the personal, right? Personal may relationship, health, then professional may your money, career goals, and then your mental health as far as the emotional goals are concerned, and then of course the spiritual goals, which is self-care or self-actualizations. These are the areas of your lives where you can reflect on. So reflect over all these areas of your life to determine whether आप कहाँ पे हो और कहाँ जाना चाहते हो, राइट? एंड रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें फर्दर, तो रिफ्लेक्शन विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन. माय रिफ्लेक्शन विल बी डिफरेंट ऑफ कोर्स, बिकॉज माय लाइफ, माय सर्कमस्टांसेस, माय सिचुएशन is different from others, similarly yours. So reflection will be different for everyone, and you can do this alone or with your friends or family, whatever you feel like. And we have talked about reflection a lot, so I'll not go much into it. This is the first step of determining your goals, as I said. So if your goals have no meaning, if your goals have no meaning, you are unlikely to achieve them. This is for sure. So you need to put some meaning, or at least, you need to know what is the kind of, you know yourself, right? You know your why. So your goals have no meaning, you are unlikely to achieve them for sure. And also, if you have too many goals, बहुत सारे goals अगर हम बना लेते हैं, तो you are also very unlikely that you will achieve them. And so it's better to pick up your top 5 to get started. पांच से ज्यादा नहीं लेने चाहिए. 5 आपके टॉप गोल्स हैं. ये देखा गया रिसर्च में भी कि too many goals will not give you any results. आप you will lose track of it. So pick your टॉप 5. तो इस माइंडसेट से बात करनी चाहिए, इस माइंडसेट से सोचना चाहिए कि मेरे 5 वो टॉप गोल्स क्या हैं, राइट? वो करियर गोल्स हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप गोल्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपसे बात करी, राइट? सो पिक अप योर top 5 goals to get started, right? Now, as far as goals are concerned, post your goals, राइट? रिफ्लेक्शन के बाद मैं ये कह रहा हूं कि पोस्ट योर गोल्स. आप अपने गोल्स को आप देयर इज अ पोस्टेड वाला जो आता है, उसको उस पे लिखो आप, और अपने कंप्यूटर पे ऐसा थीम लगाओ, अपने गोल्स को लिखो, अपने डेस्कटॉप पे वो लगा लो. सो जहां जहां आपको गोल्स, आपको जगह मिले, आप लगाओ और देखो उस गोल्स को, राइट? So post your goals wherever. So it is in front of your eyes. That's very important, very important in terms of, otherwise you will आप लिखोगे, डायरी में लिखोगे, डायरी बंद कर दोगे, डायरी भूल जाएगी, डायरी मिसप्लेस हो जाएगी, all these things, right? So your goal should be in front of your eyes always, right? Successful people do that, right? So करना क्या है? Post your goals where you can see them, right? You should post your goals where you can see them every day, every day, not even a कि एक दिन, हमने हर दिन देखना है अपने गोल्स को, राइट? तो अगर 365 डेज हैं, तो 365 डेज में हम सारा जो है, एट द एंड ऑफ द 365th डे वी शुड बी एबल टू ट्रैक दैट ये गोल था मेरा, या ये हमने इतना अचीव कर लिया. So when we write down our goals and then close the notebook, weeks go by and without ever seeing or revisiting our goals. This usually happens, right? That हमने लिखा, उस टाइम तो बहुत हम जोश में लिखते हैं, encouragement मिलती है हमें, किसी से कोई पुश करता है या कोई self motivation होता है, right? So we do that, but ultimately most of the cases we lose track of it because हमने लिखा, we close the notebook and then we don't remember that. So posting them where you can see them keeps them top of your mind. This is your priority. Make sure that this becomes your priority. Achieving goals is your priority, right? And I am a true believer in affirmations, right? As you've seen that, and vision boards and visualizations. ये करो आप, you'll also get benefit out of it, right? So every day, some kind of affirmations come from your side. So vision board बनाओ, visualize करो that you are able to achieve your goals. Be positive. अपना mindset ऐसा रखें that you are always on the top of your action, right? And your vision is clear, your visualizations, keep on visualizing that every day, or sit with yourself 5 minutes, 10 minutes, and keep visualizing that you are achieving your goals.
right? So post your goals, and then the accountability, which is very very important. Accountability kya hoga, that if there is no accountability, then we lose track of our goals. And accountability ki jab main baat karta hu, tell a friend, be engage with someone, engage with your mentor or coach or trainer or whatever, or your friend. Tell a friend that this is your goal. And in fact, even you don't want to tell कि goal कौन सा है, but how you plan to achieve the goal, you tell that. That is more important. So tell a friend. New research shows that if you tell the right people your goals, you are more likely to keep them, right? So let's say you need to tell someone you trust, right? It can be your friend, right, or mentor or coach or trainer, whatever, and select a accountability partner. I think this is very very important, because if unless and until you have your accountability partner, कहीं ना कहीं ये होगा कि जब आप किसी से बात करोगे, कोई कहीं से कोई आपको इंसाइट्स मिलती हैं, और जब आप शेयर करोगे तो यू विल बी एबल टू एनालाइज योरसेल्फ. आपकी अवेयरनेस लेवल हमेशा नो एट अ हाई डिग्री रहेगा कि yes, this is my goal, I need to achieve that, I am accountable for that, right? And I'm sharing with somebody whom I trust, right? So he or she is going to be my accountability partner, she is going to motivate me as well. So let's have a accountability partner in terms of achieving your goals, which will be useful. However, the same research found, जो हमने research में पाया कि जो goals जो है, you are more likely to keep them if you have an accountability partner. So tell the plan. Even if you don't want to tell the what is your goal, but you can at least tell a tentative plan to achieve goals. So once you are in that kind of a mindset, you are more likely to achieve your goals, right? And then keep them informed of your progress. Suppose you are talking to your mentor or friend or coach, so keep them informed that what is going on in your life in terms of that particular goal, right? And how have you reached, or at what stage you are, right? So it will give you a mental picture that you are going in a right direction, right? As far, so accountability is also very very important. Now, flexibility. After accountability, flexibility. Be flexible. And when I say flexible, then sometimes our goal becomes outdated or irrelevant. बीच में कहीं हमें लगता है कि जो गोल बनाया था जनवरी में, वो मार्च में कहीं वो मुझे रेलेवेंट नहीं लग रहा है. बट लेट्स बी फ्लेक्सिबल. क्या हम इसको ट्वीक कर सकते हैं, राइट? क्या हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं? और अगर ये इरेलीवेंट लग रहा है, आउटडेटेड लग रहा है, तो कैन वी हैव सम काइंड ऑफ ए ट्वीकिंग इन दैट गोल? सो उसको आप हटा दो and ditch those, and then you write new goals if it is relevant, to see how you might tweak the other goal you have written, right? So once you write the goal, most of the people even don't write, right? So I'm very firm believer of writing, and as you know that I'm a firm believer of journaling also, right? So write new goals if it is relevant, to see how you might tweak the other goals you have written. Now in a study, एक डेटा है मेरे पास जिसमें ये कहा गया है, और जिसमें ये देखा गया है that respondents जो है वो 42% are more likely to accomplish their goal if they write, right? If they are in a writing mindset, right? तो 42% लोग जो है वो अचीव करते हैं, और उसमें से 76% जो लोग हैं वो अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं, you know. If they develop a plan, or have a accountability partner or something, no, अगर ये सारी चीजें करते हैं तो 76% जो लोग हैं they achieve, which is a high number, which is only dropout is around 26-24%, right? So success ratio is really high when you are flexible enough and you write your own goals, right? Not peer pressure, your own goals, your own passions. So be flexible. Now start small. If I say start small, break your goals into pieces. Start small. Don't expect to completely revamp your life overnight. कि मैं वो कहते हैं ना, एक ऐड आता था पुराने जमाने में, पूरे घर के बदल डालूंगा. बजाज का ऐड था, राइट? तो पूरे घर के नहीं बदलने हैं आपने, एक एक करके बदलने हैं. So don't expect to
कंप्लीटली रिवैम्प योर लाइफ ओवरनाइट नहीं होगा वो। अगर आप ये माइंडसेट से करोगे कि मैं नहीं, मैं कर लूंगा, ये फटाफट हो जाएगा, राइट, so it नहीं होगा. So it takes time to change habits, right? Last time we talked about habits. Habit form होने में time लगता है. So it takes time to change habits and you can't do it all at once, right? So make sure you do it in parts. Start small. Let's say take a smaller goal that are easier to tackle and don't require a huge lifestyle change. इमीडिएटली कोई लाइफ स्टाइल वो धीरे धीरे चेंज करेंगे, राइट, तो डे वन से ही बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे. सो ग्रेजुअली यू विल कम टू दैट माइंडसेट. ग्रेजुअली आप उस पर स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, वन डे एट ए टाइम वाला कंसेप्ट लेके आओगे. सो दिस वे यू कैन ग्रेजुअली वर्क योर वे अप टू your challenging objectives. Suppose, let's say, for example, you want to cut down your sugary snacks right away, but it will not happen immediately. So आप धीरे धीरे you will start कि इसको मैं किस चीज से replace कर सकता हूँ, what substitute I can get to it, क्या healthier alternatives मेरे पास हैं, right? And once that becomes a little bit of your habit, once you come into that mode, then you can start moving on, eliminating things that ये वाले snacks मुझे खाने हैं, ये नहीं खाने हैं. So slowly you can have your eating patterns corrected, right? So it will not have overnight नहीं होगा. So और लोग ये एक गोल लेके चलते हैं कि नहीं मैं कल से ये खाना बंद कर दूंगा, कल से ये चीजें बंद कर दूंगा. ठीक है, विलिंगनेस, विल पावर होनी चाहिए, राइट, बट why it doesn't happen? Log, I'd say that when I tell people to quit smoking, so वो smoking overnight तो छोड़ेंगे नहीं, right? वो धीरे धीरे कट डाउन करते हैं, उनको ये धीरे धीरे कट डाउन करो, right? And let's have that kind of a result which you want, right? So for example, these things needs to be taken care of. So start small, right? And different areas of your life means आप different areas में अपने goals बनाने हैं आपने, right? So life is a multifaceted, right? So why have goals which focus only on one area? So focus on your respective areas of your life, right? So instead think about all different aspects of life, depend on the person to person, like relationship, as I said, relationship, health, career, finances, leisure activities, and create goals for each domain. Even it's a small goal, but create goals on each domain. That will give you a lot of lot of motivation to handle it and do it. So doing so helps ensure that you are giving attention to every part of your life. That's very important. We are multidimensional चीजें करते हैं हम. So हर life के हर हिस्से में हमें successful होना है. So doing so ensures that you are giving attention to every part of your life instead of just one or two, right? So prioritize. So flexibility हो गया, accountability हो गया, and different areas of your life आपने choose कर लिया. And after that, prioritize your goals. If we don't prioritize, what will happen that it will intermingle होते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे, and you will start confusing yourself that what ये पहले करूं, ये पहले करूं, कौन सा करूं. So you'll all be confused. So it's better to prioritize, decide which are the most crucial for, let's say, आपका health goal crucial है, आपके finances goal crucial है, relationship crucial है, whatever you feel that are crucial for you. As I said, take top 5, right? Priority उसको prioritize कर लो आप, right? So for me, health goals are more my top first one, right? And then comes other things, right? So I work on my health area more, and I think that ये मेरे priority है, तो इसको पहले करते हैं, second something else, third something else, right? So going full force and trying to tackle too many objectives, you will be overwhelmed for sure, and of course you will track जो है आपका, you will somewhere you will lose, and you will lose sight of what is truly important. So जो आप important goal achieve करना चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा. So let's be practical in setting your goals, prioritize your goals, and to help you decide, it will also help you decide which goals to prioritize, right? So so what are your values, what are impact, what are those impact you are going to create in your life and others life, right? So based on that you can prioritize your goals. So after you have identified the कौन से goals जो आपने prioritize करने हैं, the most meaningful and relevant should be there. Move forward at a time and break them into smaller parts. As I said, that छोटे छोटे goals को आपने
लेके चलना है, राइट? क्योंकि अगर आप एक ही साथ कोई बड़ा गोल लोगे और उसको अगर छोटे छोटे पार्ट्स में प्रैक्टिकली नहीं डिफाइन करोगे, नहीं ब्रेक करोगे, तो व्हाट विल हैपन दैट most likely you will be more confused and overwhelmed. So prioritizing is very important, and let's keep it interesting. So whenever you are achieving even the small part of your goal, let's celebrate, right? Working on your objective doesn't have to be a kind of a just कि चलो जैसे हो गया. So let's celebrate छोटी छोटी सक्सेसेस को आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दो. You can turn your goals into something enjoyable by making a game out of it, right? And reward yourself to whatever you can. No, you can self care, or you can treat yourself, right? You give yourself treat, right? And let's say you want to learn a new language. Example है कि you want to learn a new language. So one option is you grab a book, आप वो बुक पढ़ो और उससे सीखो, right? और दूसरा ये है कि you try a new app of that language, play a game with friends, right? And compete with them and see you can let's say you can understand new words of that language every day, right? So this kind of you can creativity आप लेके आओ, right? And creativity will take you to achievement of your goal. So keep it interesting. That's the crux of this. Now, as we say, smart goals, right? अब स्मार्ट गोल यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक नया पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ. विल हैव ए न्यू पर्सपेक्टिव, एंड न्यू पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ, so हम जब गोल की बात करते हैं तो we always talk about smart goals, right? We are all intelligent enough, mature enough. मुझे smart goals के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, but still, right, we have always talked about, most of the time we talk about goal setting की जब हम बात करते हैं, we talk about the smart goals, right? And most of you know that what are the smart goals, isn't it? So smart goals are एक बार just for revision sake, smart goals are what? Specific. Your goal should answer the questions of what you want to accomplish. So be specific कि क्या करना है and why it is important to you, right? So specifics में हमको जाना है. So smart goal का S का को अगर हम ले लें, right? So specific, I think इसमें हमने goal setting पे पहले भी एक बार बात की थी, तो इस पे हमने बात की थी, but still, just to refresh your memories, right? Let's say specific. Your goal should answer the question of whatever you want to accomplish and why it is important to you. So let's be specific as far as your goal setting is concerned, and it should be measurable. Measurable का मतलब ये है कि make sure it is measurable in terms of that you can quantify. You can quantify your goal in the way you have to have control. You have to have control on your goal, right? And do not rely on someone else to measure your success. It is you will able to measure your success, not anybody else, right? So your goal should be a specific one. Your goal should be measurable one. Measurable means that you need to measure, you need to quantify, right? And don't rely on someone to measure your goals. And then when we come on actionables, this should be your goal should be achievable, right? So achievable, yeah, attainable, right? So make sure a goal is achievable. So make a practical goal, right? अब किसी ने let's say if I talk about a business point of view, किसी का अभी टर्नओवर 50 करोड़ है और उसका नेक्स्ट ईयर का टारगेट अगर हम 500 करोड़ रख लेते हैं या 500 करोड़ रख लेते हैं, it's good to have that figure 500 crores, but would it be practical would to achieve 500 crores in 1 year time? You need to decide yourself, right? It should be achievable, right? So make sure your goal is achievable. Even the loftiest goal can be accomplished. So it all start with a single step. So it should be achievable. So specific, measurable, achievable, right? And next would be your realistic. It should be realistic, and it should determine the relevance. What is the kind of relevance of that particular goal which I am setting, right? So it should be realistic, and why it is important to you now, right? So relevance has a very important factor in terms of setting your goal. If there is no relevance, then I don't think so your goals should have any purpose onto that.
So relevance is particularly important when setting professional goals. Personal goals में तो आता ही आता है, professional goals भी जब आप set करते हो, so it is more relevant. Relevance is a particularly very, very important because professional goals are to be set in a very, very relevant manner, right? So हमने देखा specific, measurable, achievable, realistic, and then what is T stands for? Time bound, right? So these are smart. Time bound. Time bound means setting a specific deadline for your accomplishment. कि मैं February तक, March तक, May तक, June तक, December तक ये कर लूंगा, right? Time, it should be time bound. Time bound means setting a specific deadline for accomplishment. A deadline creates a sense of urgency to motivate us to act. If there is no time, there is no time frame, then what will happen? That you will keep on prolonging, you will keep on shifting on your own this thing. You will not be accountable for your goals, right? So time bound has to be, time has to be framed actually in terms of achieving your goals. So these are your smart goals. Whenever you do the goal setting, these usually what we do is we do this way as we suggest. Now I'll bring a new paradigm or new perspective in terms of your smart goal भी अगर आप कर रहे हो तो smart goal को भी कैसे achieve करना है, right? इसमें क्या और dimensions हम लेके आ सकते हैं, right? Usually this is the way we do. Yes or no? These are smart. Everybody knows that. Yes or no? Anyone? Yes, Sandeep. Right. So usually we use this criteria, smart wala criteria use करते हैं, right? Now इसका एक example ले लेते हैं पहले. Example क्या है smart का? Let's say here is an example. अब smart goal कैसे achieve करना है या set करना है? Let's say I'll lose 5 kg, right? This is मेरे को weight loss करना है अगर, so I'll lose 5 kg. This is my specific and measurable goal, right? 5 किलो मैंने कम करना है वेट बिफोर माय वेलनेस एग्जाम. तो मेरा जो कोई वेलनेस जो भी मैंने टारगेट किया हुआ है बिफोर माय वेलनेस एग्जाम, दैट इज योर रेलेवेंस, राइट? इन February, so that becomes your time bound. So whenever you are setting a goal, you need to be smart enough to to handle your goals in a proper manner, in a smart manner, right? So in February, which is time bound, by substituting fruits टू फॉर माई मॉर्निंग पराठास. अगर मैं क्या सब्सिट्यूट है मेरे पास, मैं को वेट लॉस करना है तो मुझे पराठा खाना छोड़ना है मॉर्निंग में, तो उसको क्या सब्सिट्यूट करूंगा? दिस इज सब्सिट्यूटिंग नो व्हाट फ्रूट्स वी आई कैन ईट, सो दैट इज अचीवेबल, right? So if you go that way, that becomes your goal smart. Or then I will lose 5 kgs. So my ultimate goal is losing 5 kgs. And how I will lose? Because we are 5 kgs is your specific and measurable, and your relevance are there because you are holding it to a particular direction in terms of a relevance, that you are before your wellness exam or whatever, or your analysis, or you're maybe going to the gym or trainer or whatever. And in February, that is your time bound by substituting fruits, which is achievable from your fruits से substitute कर देंगे हम. So this is example you can always take. Now मेरा ये कहना है that यहाँ पे we need to have a compass goal, right? Smart goal हमने बना लिया, right? But smart goal बनाने के बाद भी लोग struggle करते रहते हैं, isn't it? Yes or no? Anyone? Yes. It's a struggle for most of us, isn't it? Yeah. Right. So now a new perspective is what? You create compass goals. Ab compass goals kya hai? It's a new paradigm. Have you heard, anybody who has heard about compass goals? Rajwen? No, sir, I have not heard about it. No. Okay. So what I'm suggesting is that include compass goals. अब ये compass goals क्या है मैं आपको बताता हूँ. So a goal becomes a compass goal, right? When it improves your present in a meaningful, exciting way. उस goal को आप achieve करने के लिए, उसको attain करने के लिए,
आपका जो प्रेजेंट है, यू आर वेरी एक्साइटेड, you are very excited to achieve that, right? A goal becomes a compass goal when it improves your present, जो आपका present है, right, in a meaningful and exciting way, right? At this point of time, you're very excited in terms of your achieving of a goal. You're very motivated. That is one part, right? And then it is there to teach you something about yourself and the world, but you are not too attached to the outcome you are going after. अब ये नया पैराडाइम है, ये नया पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूं कि यू आर नॉट टू अटैच टू द आउटकम यू आर गोइंग आफ्टर. आप ये मान के चल रहे हो, राइट, ये इट इज देयर टू दैट समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड इट विल टीच यू, राइट, एंड यू आर नॉट टू अटैच्ड, राइट. ये कहता है कि इफ यू आर टू अटैच्ड इन दैट अचीविंग ऑफ दैट गोल, हो सकता है कि आप वो अचीव ना करो, बट इफ यू आर नॉट टू अटैच्ड to the outcome of then you will go after that goal in a much better way. That's a thinking, that's a psychology of compass goal, right? With a series of compass goal, life becomes a mixture of interconnection, right? And that will move you towards your greater goal or greater growth and fulfillment, right? बिकॉज अगर आप सीरीज ऑफ कंपास गोल बना देते हो और इसी पैराडाइम में अगर आप काम करते हो एंड यू आर नॉट टू अटैच्ड टू योर गोल्स, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी अटैच नहीं होना, बट यू आर नॉट टू अटैच्ड टू आउटकम ये वाला माइंडसेट अगर हम यूज करें कि आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, बट अगर नहीं हुआ, लेट्स से नहीं हुआ, तो यू आर नॉट टू अटैच्ड टू द आउटकम. what else can be done, right, in terms of that part, right? So अगर हम series of smart goal में हम compass use कर लेते हैं, compass goals use करते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे use करना है. You can try that, right? So with a series of compass goal, life becomes a mixture of interconnection, and it will move you towards a greater growth and fulfillment. How? I'll tell you. Even more importantly, you need to know if your goal or a destination is even be what do you call even your worth कंपास अगर आप लगाते हो कि ये जो गोल मैं अचीव करना चाह रहा हूं या चाह रही हूँ, एवन ये वर्थ है भी या नहीं है. गोल मैंने बना तो लिया, लेकिन when you are putting your compass वाला कंसेप्ट अगर इसमें डाल देते हो, then you are able to analyze, you are able to identify whether your goal is worth enough the effort what you are doing, right? So you will be able to understand yourself, you will be able to understand your goal in a better way. So chances are there that you are in a much better way, you will be able to achieve that, right? And you are not attached to it, not too attached to it, right? So the compass concept will show you exactly how to decide which of your goals are worth going for, और किसको छोड़ना है, किसको लेके चलना है आगे, and how to go about pursue, और उसको pursuing कैसे करनी है उसकी, right? So compass concept will show you the exactly how to decide which of your goals are worth going for and how to go about pursuing them. So I'll tell you the examples also, right? How to set your compass. So if you set your compass in a right direction, you will be able to achieve your goals for sure. So इसको हम आगे समझते हैं और compass goals के बारे में आगे बात करते हैं. So next हमारा ये क्या कहता है? Next हमारा कहता है कि let's say yeah, the compass goal checklist. क्या क्या checklist है? We need to know that, right? The compass goal checklist is this goal something I can see myself pursuing with excitement? क्या मैं excited हूँ? क्या मैं इतना motivation है मेरे में? Is this goal something I can see pursuing with this assessment despite all its challenges, despite all its difficulties? So that is the number one thing should come in your mind while talking about the compass concept जो हम बात कर रहे हैं. तो compass goal की checklist कैसे देखनी है कि जो गोल मेरे पास है अभी, जो मैं बनाने जा रहा हूं या जा रही हूं, इज दिस गोल समथिंग आई कैन सी माई सेल्फ परसुइंग विद एक्साइटमेंट, या लॉन्ग टर्म में मेरा अभी ये टेम्पोररी फेज है, आई कैन फोरसी दैट इट कैन डाई डाउन, माई एक्साइटमेंट कैन डाई डाउन डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस आई विल फेस. अगर तो वो है, अगर तो वो आपके इनर वॉइस कैरी आपकी नहीं, पूरा ये मोटिवेशन रहेगा मेरे को, आई विल नॉट डाई डाउन इन बिटवीन इन टर्म्स ऑफ ए गोल, right? So you need to check that. So that's your compass checklist number one.
नाउ डज इट गिव मी द रिवार्ड्स अलोंग द वे? क्या मैं ये चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, जो इतने रिवार्ड्स में चाह रहा हूँ, क्या है वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? इतना एफर्ट करने का फायदा भी है या नहीं है? राइट, तो कंपास कहाँ आएगा मैं आपको अभी बताऊंगा। सो राइट, so is this goal something I can see myself pursuing with excitement? That is one. Second, can I write a set of daily or weekly actions? उसके साथ क्या मैं डेली और वीकली एक्शन लिख सकता हूं या लिख सकती हूं कि नहीं, कंसिस्टेंट बेसिस पे, राइट? So, and can I do the adjustments there whenever the necessary things are there in terms of adjusting? क्या मैं उसको tweak कर सकता हूँ? नहीं कर, unless I reach my goal, or the way I am doing it, can I tweak that way? Right. So first thing is that, are you excited enough, right? That you are pursuing this goal? आपको अगर challenges भी आएंगे, you are sure enough, you are एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड कि अगर डिफिकल्टी भी आती है, चैलेंजेस भी आते हैं, बट यू विल नॉट फेड इन टर्म्स ऑफ योर मोटिवेशन एंड एक्साइटमेंट। और क्या ये मेरे को उतना रिवार्ड दे देगा? दैट इज नंबर वन। दूसरा, क्या मैं क्या मैं आई कैन सेट माई सेल्फ, कैन आई सेट माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ that I can write down my daily action points or weekly action points, so that I should be consistent enough to adjust or do things. How can I do things in a different way to reach my goals, right? Even if some tweaking is required, right? Number three, do I have a way to measure my progress? That is your compass. मेजरिंग की बात मैंने स्मार्ट गोल में भी करी ना, तो इसमें मैंने कंपास जोड़ दिया, राइट? सो डू आई हैव ए मेजरिंग इन एनी वे? क्या मेरे पास कोई एक ऐसा वे है जिससे मैं मेजर कर रहा हूं अपनी प्रोग्रेस या कर रही हूं अपनी प्रोग्रेस? सो दैट्स योर कंपास। नाउ विल आई बी ओके, will I be okay with not getting the outcome I want, because I recognize how good or how is the journey is more important, and this journey will become what do you call, whatever challenges will come, regardless of all the things, my journey will continue, right? So you are okay with it, with you, it is okay with you whether if you are not able to achieve the outcome you desire, will I be okay? सो ये आपने अपने आप से ये 4 क्वेश्चंस पूछने हैं। सो दैट्स योर कंपास गोल चेकलिस्ट। अब नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल्स कि आप इसको प्रैक्टिकली कैसे करोगे, राइट? सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन, दिस कंपास गोल चेकलिस्ट? यस और नो? सर एक बार हिंदी में थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में और एक बार और बता दें। हाँ ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में ये बताता हूं कि 4 चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले ये देखना है कि ये जो गोल मैं बना रहा हूं या बना रही हूं, राइट, आर यू एक्साइटेड? आप इसको एक्साइटमेंट से जो है आप और मोटिवेशन से आप परसू करोगे, क्योंकि गोल को अचीव करने में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आएंगे, राइट? सो डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज, जो जितनी भी डिफिकल्टीज है, क्या आप उसको हैंडल कर सकते हो, राइट? सो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और क्या ये सब इतना जो हम तामझाम कर रहे हैं, इतना जो तामझाम इस गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में रिवार्ड मुझे जो मैं चाह रहा हूं वो देगा या नहीं देगा, राइट? सो दैट इज वन पार्ट, राइट? और दूसरा, क्या मैं इस सिचुएशन में क्या मैं अपना डेली एक्शन जो हम करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, क्या मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूं या वीकली एक्शंस बना सकती हूँ, कंसिस्टेंट हो सकती हूँ क्या मैं, राइट? तो और क्या कुछ एडजस्टमेंट्स जो डाउन द लाइन अगर मुझे करने होंगे, जब तक मैं उस गोल को मैं अचीव नहीं कर लेती, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, राइट? सो क्या मैं इस पोजीशन में लिख सकती हूँ, राइट, या नहीं लिख सकती? तीसरा, क्या मेरे पास वो लेट्स से कि किस तरह से मैं उसको मेजर करूंगी, मैं अपनी प्रोग्रेस को, राइट? सो मेरे पास क्या है जिससे मैं वो मेजर कर सकती हूँ, मतलब क्वांटिफाई की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने पहले स्लाइड्स में बोला था। सो डू आई हैव, मेरे पास क्या वो मेजरिंग कैपेबिलिटीज हैं या नहीं है, राइट? या मेजरिंग का कुछ क्वांटिफाई करने के लिए मेरे पास कुछ है या नहीं है, राइट? अच्छा, द लास्ट बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे कि अगर वो गोल अचीव नहीं भी होता है, तो एम आई ओके विद इट और नॉट, राइट? और यू विल गो इनटू ए गिल्ट अगेन, राइट? एक तो वैसे ही गिल्ट है कि मैं गोल अचीव नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, राइट? लेकिन क्या ये आप ओके हो उसमें, राइट, कि अगर वो रिजल्ट नहीं भी आता जो आप चाह रहे हो, राइट, बट
जो जर्नी है आप करोगे, जो जर्नी उस जो गोल को अचीव करने को, सो वो आप जर्नी को वैल्यू करोगे, राइट, इन स्पाइट ऑफ द रिजल्ट, अगर होगा या नहीं होगा। सो अगर नहीं भी होता है, अगर इस माइंडसेट से आप अपने गोल को अचीव करने में टाइम लगाओगे, तो मोस्ट लाइकली यू विल बी एबल टू अचीव द गोल। दिस इज व्हाट द कंपास इज ऑल अबाउट। अभी क्लियर हुआ? मीना जी ने शायद पूछा था। मीना जी, अभी क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो रहा है, पर ये बताएं कि हम यहाँ पे हम लोग डाउट भी एक बीच में ला रहे हैं ना, हम लोग डाउट भी बीच में ला हाँ, तो रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको अवेयरनेस, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं विल आई बी ओके, ये क्वेश्चन आपने पूछना अपने आप से ना, हम्म। आपने आपसे क्वेश्चन पूछना है। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कई गोल्स पूरे नहीं होते नहीं हैं, नहीं होते हैं, नहीं डिटर्मिनेशन में होते हैं ना, कहीं तो कहीं रह हाँ, जाती है, या हाँ, मैं यही सिचुएशन कह ऐसी रहा होती हूँ, है। दिस इज द जो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर ये गोल अचीव नहीं होता है, राइट, यही यही लिखा है कि अगर ये गोल अचीव नहीं होता है तो विल आई बी ओके। अगर आप ओके हो, मतलब ये कंपास का एक कंसेप्ट है, मतलब ये चेकलिस्ट है आपकी। आपने अपने आप से पूछना है कि विल आई बी ओके, कि अगर व्हाट ये इज द गोल, चॉइस? What is the choice? You have to be accepting, no? Accept with हाँ, तो दैट्स व्हाट आइदर, complaint, accept with हाँ, regret, या मतलब वही acceptance करना है, तो पे। यू शुड बी ओके इनफ ना। यू ओके का मतलब ये है कि मतलब ऐसा ना कि अगर नहीं हुआ तो वो गिल्ट में चले गए दोबारा से, तो वो एक दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बट यू नीड टू फिगर इट आउट कि अगर नहीं भी हुआ, लेकिन वो जर्नी मैंने जो करी है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दैट गोल, इट इज वर्थ इट, राइट। अगर नहीं भी हुआ, आपने बेस्ट एफर्ट कर भी लिया और नहीं भी आउटकम वो अचीव हो पाया, will you be okay or not? If you say you are okay with it, then you will, in fact, when you come with this mindset, most likely आपका गोल अचीव हो जाएगा 99% केसेस में, right? It has been researched like that. तो ये वाला जो माइंडसेट है, ये हमेशा रहना चाहिए। दिस इज द न्यू पैराडाइम विच आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ, राइट। वी कैन डिस्कस फर्दर इन दैट। एक बार हम इस पे बात कर लेते हैं, और सो आगे एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे करना है नाउ। सो अभी वही मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन जो चौथा वाला क्वेश्चन था चेकलिस्ट में, विल आई बी ओके विद नॉट गेटिंग द आउटकम आई वांट, राइट, और क्या मैं आई कैन वैल्यू द जर्नी, राइट, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, राइट। सो इसमें being okay with not reaching the result, अब your answer will come here also. Being okay with not reaching the result helps you relieve your enormous amount of प्रेशर। आप जो प्रेशर फील करते हो कि ये गोल अचीव करना है, तो इट विल रिलीव विद, यू विल बी रिलीव्ड। जो आपके ऊपर वो जो प्रेशर होता है गोल अचीवमेंट करने का, या किसी के ऊपर भी होता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, यू विल नॉट फील दैट इफ यू वर्क इन दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। और उसमें कंपास कैसे लेके आएंगे, जब मैं एग्जाम्पल अभी दूंगा आपको। सो बीइंग ओके विद नॉट रीचिंग द रिजल्ट हेल्प्स यू रिलीव योर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर, जो कि प्रेशर आप पे रहता है अचीवमेंट का। नाउ इफ यू आर ओके विद नॉट गेटिंग द रिजल्ट यू वांट इन एडवांस, यू डोंट लिव इट इन ए पैराडाइम, मेक इट और ब्रेक इट पैराडाइम वाला में। आप ऑलरेडी यू आर इन एडवांस, आपको पता है कि ये नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा, आई एम ओके विद इट, राइट। So if you're okay with not getting the result what you want in advance, I know we can have a lot of discussions there here, we can and we can come out with a really well crafted insight after that, right. So if you're okay with not getting the result you want to in advance, you don't live in a make it or break it kind of a paradigm. And if you're okay with not getting the result you want in advance, you don't live as it suggests, only by letting go of the outcomes we seek, right. So जब आप लेट गो कर देते हो ना आउटकम, सो आप ये समझना यहाँ पे कि अगर आप जब लेट गो बात या लेट गो अपने गोल को कर रहे हो, और लेट गो ऑफ द आउटकम वी सीक व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स देम, that is where you are freer and likelier to achieve them. That's what my take is. This is my take, this is my compass. It's only by letting go of the outcome we seek while working towards them. हम काम कर रहे हैं,
वी आर वर्किंग टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दैट गोल, वी आर नॉट, हम अपने एफर्ट्स नहीं कम कर रहे हैं, हम अपने एफर्ट्स सारे कर रहे हैं, लेकिन जब हम लेट गो कर रहे हैं उस आउटकम को कि अगर नहीं भी अचीव हुआ, बट आई एम रियलिशिंग, I am enjoying the effort, I have done my best of the effort, right? So you are likely to achieve it, in fact. So you are more freer, you are more likelier to achieve them, and that's becomes the fact. आप इसको एक्सपीरियंस करके देखना, एक पर्टिकुलर गोल लेके उसके बाद आप एक्सपीरियंस करना. सो कुछ एग्जांपल्स के मैं समझाऊंगा अभी. इफ यू आंसर्ड yes to all the 4 questions, yes, if you answered yes to all these 4 questions, then you have successfully created a compass goal. तब वो आपका गोल जो है वो कंपास गोल में क्रिएट हो जाएगा. गॉट इट? सो कंपास गोल में तभी क्रिएट होगा जब आपका ये चारों का क्वेश्चन यस 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 आएगा, राइट? अगर नहीं आएगा तो फिर वो कंपास गोल नहीं रह जाएगा. अब कंपास गोल में हम बनाना कैसे हमें, राइट? सो लेट अस से we need to have a map, right, in terms of making a compass goal. So writing the goals you want to go for and qualifying them with the 4 questions checklist जो मैंने आपको बताई is one of the secrets to achieve your new year goals. But for every destination, for every goal, you need a map. आजकल तो मैप के बिना हम गाड़ी भी नहीं चलाते, राइट? सो राइट, जो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आप एक जीपीएस तो ऑन करोगे, राइट? सो व्हाट वुड बी दैट जीपीएस? सो लेट्स डू दैट जीपीएस. सो एग्जांपल इज, if it is your compass goal to 15 kg का एग्जांपल मैंने पहले लिया था स्मार्ट गोल में भी. सो if it is your compass goal to burn 5 kg of fat, then your map could look like this, which is, let's understand your why. मेरा why क्या है? मेरा why है क्यों मैं ये करना चाह रहा हूं. So your why is clear, to feel light and athletic, right? So this is my why. My why is clear, then my next of the 2 action points which will come will also be clearer to me, right? So action 1 will, I eat 3 bowls of vegetables and drink at least 8 glasses of water per day. This is my action. So that's what I said. वो 4 checklist में, राइट? सो वाई क्लियर हो गया. यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि मुझे गोल क्या है. गोल हमारे 5 किलो का वजन कम करना है अपना, राइट? सो माई वाई इज गोइंग टू बी क्लियर. क्यों करना चाहता हूँ? टू फील लाइट एंड एथलेटिक्स. उसमें एक्शन क्या करूंगा? आई ईट 3 balls of vegetables and drink at least 8 glasses of water per day. This is my action number 1, which I'll do, right? Now action number 2 is, I go to gym 3 times per week. I go to the gym 3 times per week and do 1 cardio session every Saturday. This is my action point 2. अब ये 2 एक्शन मैंने बना लिए, मेरे वाई क्लियर हो गया, मैंने एक्शन 1 कर लिया, एक्शन 2 कर लिया. नाउ व्हाट वुड बी माय कंपास गोल? कंपास गोल को अब कैसे करेंगे? जब मेजरमेंट की बात करी थी मैंने, कंपास क्या होगा? आई वे माई सेल्फ एवरी मंडे. वेरी सिंपल. आई वे माई सेल्फ एवरी मंडे टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच वेट आई एम लूजिंग. This is a compass. So when you add compass onto your goal, it becomes a goal जो जिसको मैं कंपास गोल कर रहा हूँ, वो स्मार्ट गोल्स को ही मैं एड ऑन कंपास के साथ कर रहा हूँ, ताकि आपका जो हर मोमेंट पे जो है आप ट्रैक कर रहे हो, राइट? सो आई एम वेइंग माई सेल्फ एवरी मंडे. सो आई एम इवेल्युएटिंग ना, आई एम ट्रैकिंग माई सेल्फ. दिस इज ए कंपास गोल आई एम मेकिंग. I'm making my smart goal little in a wider horizon in terms of I'm making एक add कर रहा हूं मैं उसमें compass, right? वो तो आप कर रहे हो, लेकिन even with your smart goals you're not able to achieve that, no? So let's have that compass goal together, all together. So this is your example number 1. Similarly, I'll give you another example. Let us say that example number 2. If it is your compass goal to read 52 books at the end of the year, मेरे को 52 बुक्स पढ़नी है पूरे साल में, राइट? देन योर मैप माइट लुक लाइक दिस. लेट्स सी व्हाट वुड बी माय व्हाई. मेरा व्हाई क्या क्लियर है? मुझे ये क्लियर है कि टू बिकम मोर नॉलेजेबल ऑन एरियाज दैट विल हेल्प मी एंड हेल्प दोज अराउंड मी आल्सो, राइट? दिस इज माय व्हाई. सो माय व्हाई इज क्लियर. टू बिकम मोर नॉलेजेबल, मुझे अपने आप को और निखारना है, और नॉलेज गेन करनी है, और अपने आप पे काम करना है, और उन लोगों पे भी काम करना है जो मेरे साथ अटैच्ड हैं, लेट्स से, राइट? सो माय व्हाई इज क्लियर, राइट? माय गोल इज 52 बुक्स पढ़नी है मैंने पूरे साल के अंदर, राइट? सो मेरा ये क्यों पढ़नी है, मेरा व्हाई क्लियर हो गया यहाँ पे. नाउ एक्शन क्या आएगा? एक्शन 1,
I will listen to an audiobook on my way to commute to work every week. जब मैं कम्यूट करता हूँ, मैं अपना टाइम भी सेव कर रहा हूँ, मैं अपना वो टाइम को यूज कर रहा हूँ, एंड आई एम लिसनिंग ऑडियो बुक every day, kind of, or every week, whatever. So I'm action one कर रहा हूँ. Similarly, action two में क्या कर रहा हूँ? Action two कर रहा हूँ, I crave out 30 minutes each day in evening to read. In spite of all the challenges, in spite of all the scarcity of time, I am making sure that I can get at least 30 minutes for myself to read, right? So this is my action two. If my why is clear, my action, I'm doing action one, I'm doing action two, then my compass goal would be look like this. The compass would be, let's say I use goodreads.com to track my reading habits. So I use goodreads.com weekly to keep track of the books I'm reading. You can use this, by the way, goodreads.com is a good website and app to track yourself, your reading abilities, right? So I use goodreads.com weekly to keep track of books I am reading. So this becomes my compass goal. So smart goal के साथ साथ मैंने एक another perspective, एक another paradigm जो है वो ले लिया कि compass मैं track कर रहा हूँ उसको साथ साथ, right? So this is example number two. एक example और लेते हैं. Let's have number three. So example, we still have time, no? So 5 minutes. Okay. So example number three is, if it is your compass goal to increase your salary by 20K, then your map might look something like this, right? मेरे को अपनी income 20,000 monthly और बढ़ानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा why क्या है? So let us see that my why is to help improve my sense of freedom. मुझे अपना financial freedom चाहिए. Let's say I need to improve my financial situation, or I need to have more sense of freedom. This is my why. My why is clear. Then action one would be, action one is I try to sell 3 more things in my home each month. क्या मैं और कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ? क्या कुछ सर्विसेज में सेल कर सकता हूँ? राइट, वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ स्टफ, राइट? सो क्या एड ऑन कर सकता हूँ मैं? एक्शन वन, आई ट्राई टू सेल 3 things, right, in my home each month. This is action number one. Similarly, action number two would be I spend 1 hour a week looking for freelance roles. क्या मैं कुछ freelancing roles ले सकता हूँ क्या? I spend 1 hour a week in finding out or in doing कि freelancing roles क्या available है मेरे लिए, so that I can generate additional say income of 20K or something like that. So my why is clear. My action one is coming, action two is coming, and then what would be my compass? The compass is that I write down how much I have earned every 2 weeks. हर 2 हफ्ते में मैं लिखूंगा कि मैंने क्या, how much I have earned. So to see how much more money I am making. So I'm adding a compass onto your goals, right? So that's what, if you add your compass, right, your compass will be yours. My compass would be mine, right? So if you do your goals in this kind of a fashion, I am sure that you are more or most likely to achieve your goals, right? And why it is important, why it is needed. A compass lets you see how close you are to your destination, so that you can make adjustments that will take you to a goal faster, right? So your tracking will be easier. Your tracking will be easier. अभी जहां पे आप struggle कर रहे हो, वो struggling area जो है, that will be better in terms of आप track कर पाओगे, or you will be more likely to achieve your goals. And without one, you won't arrive where you want nearly as quickly as you want, and you might even get lost along the way, right? So this is what, and this is why the compass goal. Using a compass regularly reminds you to stay motivated and on track throughout the year, right? And it encourages you to think of creative ideas on how to reach your goals in a more effective manner, right? So that's why the compass is required. And with the common, as I said, with the common SMART goals approach, you are told to set a deadline for each goal so that you are stressed. So SMART goal to hum kar hi rahe hain, right? And we are most of us are attuned or aligned with our SMART goals, right? We are mature enough to have SMART goals. So only thing is that you need to add
your compass into that. So add your compass into your SMART goal and achieve your goals and create the impact which you wanted to create always, right? So, but developing a map and compass for each of your goal is more important than having a planned completion date. So add your compass and start adding on each of your goals in order to achieve your overall goals. That's what I wanted to share today. And with this, I come to end of my session. Anybody else would like to share anything, any insights, any clarifications? Hello. Sir, recording off होएगी